गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। इस साल की सबसे हसीन रात में आपका स्वागत है। सिर्फ यहाँ आज शाम इस मंच पर हिंदुस्तान के 30 कल्चरली रिच स्टेट से सबसे चार्मिंग 30 लेडीज अपने रूप, हुनर और हाजिर जवाबी के दम पर उस सबसे कवेटेड एंड रिस्पेक्टेड क्राउन को हासिल करने के लिए कंटेस्ट करेंगी और सिर्फ कोई एक बनेगी FPB कलर्स फेमिना मिस इंडिया 2019। और मैं करण जौहर इस साल फिर से हाजिर हूं बिकॉज इट इज माई ड्यूटी फॉर दीज ब्यूटीज। एक मिनट स्वागत नहीं करोगे हमारा? क्या बात है। ऑलराइट, कैसे हैं आप लोग? कम ऑन एवरीबॉडी, कम ऑन यार, एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए फॉर द वन एंड ओनली मनीष पॉल। या सर, एक बात सच बताऊं? हाँ सर, दिल से बता रहा हूं, मुझे ना इस मंच पे वापस आकर बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा। मुझे लग रहा है मनीष पॉल का जन्म ही मिस इंडिया होस्ट करने के लिए हुआ था। इट्स माय फेवरेट नाइट सर। 30 स्टेट से 30 गॉर्जियस वुमेन डिवाइडेड इनटू 4 जोन्स। यहाँ ब्यूटी और ब्रेन्स दोनों का टेस्ट है बॉस। वाओ, फैंटास्टिक। हम हमारी गर्ल्स को इतना तैयार करते हैं that they can represent India globally। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, और हिंदुस्तान के हर राज्य के इसी रंग की रंगोली बनाने, हर स्टेट के इंडिविजुअल कल्चर और डांस फॉर्म को सेलिब्रेट करने के लिए मैं स्टेज पे बुलाना चाहूंगा फॉर द फर्स्ट टाइम लेडीज एंड जेंटलमैन टुनाइट द 30 स्टेट विनर्स ऑफ FPB कलर्स फेमिना मिस इंडिया 2019। हवा के झोंके आज मौसमों से रूठ गए, गुलों की शोखियां जो भंवरे आके लूट गए। बदल रही है आज जिंदगी की चाल जरा, इसी बहाने क्यों ना मैं भी दिल का हाल जरा सवार लूं, है सवार लूं, सवार लूं, सवार लूं। हे डोला रे डोला रे डोला रे डोला, हाय डोला दिल डोला मन डोला रे डोला। लग जाने दो नजरिया, गिर जाने दो बिजुरिया, बांध के मैं घुंघरू, पहन के मैं पायल, झूम के नाचूंगी, घूम के नाचूंगी। डोला रे डोला रे डोला रे डोला, हाय डोला दिल डोला मन डोला रे डोला। मोरे बंसी बजैया, मोरे बंसी बजैया, ददराला कन्हैया, मोहे मोहे ऐसे नहीं छेड़ा सावरे, सुन सुन माँ से नहीं खेला दावरे, जाके यशोदा से कह दूंगी रे, कान्हा सुधा सुधा, कान्हा सुधा सुधा।
जाओ तू भी गिद्दा पा दे चल रंग जमा दे हमके बने सभी मत वाले मन कहे कि रहने आऊं चांद और तारे सारे इन बातों पर मैं चांद रखूं इस मांग में भर दूं तारे हेलो हेलो तू फ्लोर पे कब है आई हेलो हेलो बोल तो मेरे भाई बोल तो मेरे भाई बोल तो मेरे भाई ये थी हमारी 30 स्टेट विनर्स जो हर एक किसी विश्व सुंदरी से कम नहीं। बिल्कुल, और इन्हीं में से कोई एक सर्वगुण संपन्न सुंदरी बनेगी FBB कलर्स फेमिना मिस इंडिया 2019। आइए अब उनसे मिलते हैं जो आज मिस इंडिया को बनाएंगे। यानी इस साल की FBB कलर्स फेमिना मिस इंडिया 2019 ढूंढने के लिए लेट अस मीट द जजेस। Absolutely, ladies and gentlemen. First up, ladies and gentlemen, is the athletic icon of the country. Please welcome the sprinter extraordinaire from India, Duti Chand. Let's have a big hand, ladies and gentlemen. Well, हमारे अगले जजेस ने बियोंसे से लेकर जेनिफर लोपेज और आज हमारी गर्ल्स को भी स्टाइल किया है। Acclaimed international age designer duo Falguni and Shane Peacock. Our next judge for the night is none other than the gorgeous and amazing Queen of the World, Miss World 2018, Vanessa Ponce de Leon Sanchez. और अब आ रहे हैं हमारे देसी फुटबॉल के महारथी, the man who put Indian football on the world map, the amazing Sunil Chhetri. Ugly judge is so beautiful and sexy, the very stunning, the supremely talented Chitrangada Singh. हमारी next judge presenting the stunning and supremely talented Miss Vasayapur, Huma Qureshi. हमारे अगले जज ने हम सबको दिया our favorite Garba anthem. Please welcome the star and the very talented Ayush Sharma. And finally, the spectacular Remo D'Souza. Ladies and gentlemen, we live in a world जहां खो जाने पर ना यार फिरंगियों की एक आवाज आती है हमें रास्ता दिखाने के लिए। In 500 meters, take a right for सेनापति बापट मार्ग। सर कसम से बता रहा हूँ, लोअर परेल में ना LA वाली फीलिंग आती है मुझे। Moving on. हमारी इन अमेजिंग स्टेट विनर्स को गाइड करने के लिए कोई फिक्स्ड मैप्स नहीं थे, बट उनके पास ये अमेजिंग मेंटोर्स थे। मेंटोर्स, वेल मैं आपको बताऊं, इस पुरानी बात को जरा पीछे रखते हैं। ये हो गया पुराना, ये है भैया नया जमाना। प्लीज वेलकम आवर वुमेंटोर्स। हमारी सारी कंटेस्टेंट्स को हमने डिवाइड किया है 2 टीम्स में। तो पहले बुलाते हैं नॉर्थ एंड साउथ जोन की मेंटोर एंड गाइडिंग लाइट, द ब्यूटीफुल एंड ऑलवेज इटर्नली ग्रेसफुल दिया मिर्जा। और वेस्ट एंड ईस्ट जोन की बॉस लेडी, वेल जिस तरह कोच गैरी कर्स्टन ने 28 साल के बाद इंडिया को वर्ल्ड कप जिताया था, उसी तरह इनकी शिष्या मनुश्री छिल्लर ने भी 17 साल के बाद वर्ल्ड खिताब जीता। प्लीज वेलकम नेहा धूपिया। All right, dear Neha, firstly, welcome to this wonderful evening. आप दोनों जो है इन गर्ल्स की ये जो जर्नी रही है उसमें फर्स्ट डे से अप टिल टुडे आप उनके साथ रही हैं. And you know today when your babies go out into the world to conquer it, how do you feel? क्या कहना है दिया? Good evening, namaste. It's been a really amazing journey क्योंकि ये मेरा पहला साल था mentoring का. Neha of course is a pro.
मेरे लिए आई थिंक सबसे ख़ास बात ये रही है कि जब मेरी मुलाकात लड़कियों से पहली बार हुई, वो बहुत सिंसियर और ऑनेस्ट नज़र आई. Over the last 2 months, it was remarkable to see their transformation. And they were more confident than they ever had been. It was just so amazing. दिल खुश हो गया. मैं बस एक्चुअली नेहा से पूछना चाहूंगा कि उनकी एक्सपीरियंस क्या रही थी. सबसे पहले तो जो सवाल मनीष ने पूछा, दिया ने जो कहा, सेम फीलिंग. मतलब शी कवर्ड इट ऑल, व्हिच इज अमेजिंग. पर इस बार मैं बस ये सोच रही हूँ कि ईस्ट और वेस्ट जोन में से किसी को जरूर जीतना चाहिए. नॉर्थ हो, वेस्ट हो, साउथ हो, ईस्ट हो, इंडिया बेस्ट है. एंड आई थिंक बिल्कुल. वी हैव द मोस्ट अमेजिंग वुमेन इन दिस कंट्री. Absolutely, yeah. एंड ये हम कह सकते हैं बिकॉज वी हैव टू अमेजिंग वुमेन ऑन स्टेज टुडे. बोथ हैव बीन पेजेंट विनर्स, ladies and gentlemen, and Come on, ladies and gentlemen. they've had incredible journeys. So give it up for Diya Mirza and Neha Dhupia. Thank you so much for joining us, lovely ladies. और अब हमारे कंटेस्टेंट्स में जोश भरने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा उसे जिसका जोश रहता है हमेशा हाई. Presenting to you, Vicky Kaushal. नमस्ते बहनों भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये है. Oh God, one more remix. दिल धड़काए और सीटी बजाए, दिल धड़काए सीटी बजाए, बीच सड़क पे नखरे दिखाए सारे हो करके इशारे. हो लड़की हो लड़की Bring that back. हो लड़की हो लड़की मेरे इशारे पे तो दिन दिन नाचा जो ट्विटर पे ट्रेंड हो गया. नासिक के ढोल पे धन 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 नाचा तो सबका दी एंड हो गया. सारी दुनिया में एक ही फेमस है, मुंबई हो या और दिखा तू तुझे मेरा वाला डांस. ये है मेरा वाला डांस. तो नाचू ये है मेरा वाला डांस. तो नाचू ये है मेरा वाला डांस. तो नाचू
है ladies and gentlemen, अगले राउंड की बारी. Tonight, FPB has partnered with ace designer duo Pankaj and Nidhi to create a jewel-toned collection which is dramatic, glamorous and sure to enthrall us all. It showcases monochromatic embellishments with a smattering of shine and geometric fringes from ruby reds to sapphire blues. The collection is styled by Isha Amin and exquisite series handbags. Please give it up for our wonderful ladies. रास्ते जहाँ भी दूँ मैं गवाह माँ भी दूँ किस्मतों का लिखा मोड़ दूँ बदलेंगे मैं तेरे जो खुदा खुद भी दे जन्नते सच में छोड़ दूँ तुमसे सपना मैं ना जानूं तुमसे खुद को मैं पहचानूं तुमको बस मैं इतना मानूं माहिया रास्ते जहाँ भी दूँ मैं गवाह माँ भी दूँ. Ladies and gentlemen, our 30 state winners, starting with Mansi Dakshak. Miss Gujarat has completed her bachelor's in journalism and aspires to be a political journalist. Vaishnavi Andle, Miss Maharashtra, is a model and a law student and aspires to be an actor. Suman Rao, Miss Rajasthan, is studying chartered accountancy and is a trained Kathak dancer. Shastra Shetty, Miss Goa, has done her bachelor's in media and communication and aspires to become an IFS officer. Shinata Chauhan, Miss Uttar Pradesh, is one of the youngest contestants here. She is looking to graduate in mass media and aspires to become a star. Mansi Sehgal, Miss Delhi, is an engineering student and currently working on an entertainment startup. Garima Verma, Miss Himachal Pradesh, has done her Masters in Commerce and has also acted in TV shows. Garima Yadav, Miss Madhya Pradesh, is an electronics and communications engineer and a model. Siddhi Gupta, Miss Uttarakhand, is an economics and finance graduate and aspires to become a UN speaker. Megha Kaul, Miss Jammu and Kashmir, is a doctor and enjoys motorbike riding. Sonal Sharma, Miss Haryana, is a business graduate and also a certified paragliding pilot. Harnaz Kaur, Miss Punjab, is a student of information technology and aspires to become a successful model. Sangeeta Das, Miss Meghalaya, is a civil engineering student and aspires to build better infrastructure for our country. Sushmita Roy, Miss West Bengal, is pursuing her Masters in Dietetics and Food Service Management. Roshni Dada, Miss Arunachal Pradesh, is currently studying BSc in Nursing and aspires to become a military nurse to serve the country. Lalunthari Rowling, Miss Mizoram, is a graduate and works with the Health and Family Welfare Department of the government. Shivani Jadhav, Miss Chhattisgarh, is a software developer and believes in finding happiness in small things. Chitrapriya Singh, Miss Jharkhand, is pursuing Bachelor's in Arts and is an animal lover. Shreya Shankar, Miss Bihar, is a graduate in BCom Honours and is a state-level air rifle shooter. Marina Kehoe, Miss Nagaland, is a political science graduate and a fashion entrepreneur. Jayanti Riang, Miss Tripura, is studying English Honours and aspires to become an air hostess. Sheetal Sahu, Miss Odisha, is a software engineer and loves poetry. Jyotishmita Barua, Miss Assam, is a zoology student and is passionate about turtle conservation. Sangdoma Tamong, Miss Sikkim, is pursuing her bachelor's in education and is a photography enthusiast. Urmila Sagolsem, Miss Manipur, is pursuing her master's in sociology and aspires to pursue the noble cause of teaching. Sanjana Vij, Miss Telangana, has done her master's in biotechnology and aspires to be an actor.
Rubia SK, Miss Tamil Nadu, is an architect and aims to set up a foundation to address mental health. Ashna Bisht, Miss Karnataka, is an engineer and wants to pursue a degree in fashion and brand management. Lakshmi Menon, Miss Kerala, is an engineering graduate and aspires to be a textile entrepreneur. Nikita Tanwani, Miss Andhra Pradesh, is a postgraduate in mathematics and works as an application engineer in Oracle. Ladies and gentlemen, please welcome with a huge round of applause the designer, Pankaj Ahuja. Ladies and gentlemen, here are our 30 state winners for 2019. Girls, we will see you in the next round. मैं आपको बताना चाहता हूं ये मनीष पॉल जब मुंबई आया था स्ट्रगल करके इतना बड़ा इंसान बनने और फाइनली स्टार बनने सर उसकी कहानी सुनाना चाहता हूं और हाँ बोलो तो सर आप थोड़े इंटरेस्टेड कम लग रहे हैं मुझे लग रहा है क्योंकि मनीष पॉल तुम खुद एक बहुत बड़े मिसअंडरस्टैंडिंग हो मुझे कहा गया था कि मेरे साथ कोई मेरे लेवल का सेलिब्रिटी होस्ट होगा मुझे क्या मालूम था कि मेरे गले तुम पड़ जाओगे सर कमाल कर रहे हैं नहीं सर एक बात बताऊं नहीं मजाक ठीक है सर अब ये बहुत ज्यादा हो रहा है दिस गेटिंग अ लिटिल टू मच नहीं मतलब बहुत ज्यादा गलत हो गया सर ये आई थिंक इट्स डन आई थिंक वी शुड जस्ट फिनिश इट ऑफ आई थिंक ब्रेकअप हो जाना चाहिए सर ब्रेकअप हो जाए सर मतलब इतनी थोड़ी कोई बेइज्जती करता है ठीक है चलता है मतलब पैदा हुआ हूं तुम्हारी बेइज्जती करने के लिए मेरी बेइज्जती पे तालियां क्यों बजा रहे हैं आप लोग प्लीज ताली ना बजाएं Hey guys, what's up? Oh my God, look who's here. ये पहली ऐसी डॉक्टर है जिसके हाथ से पेशेंट हंसते हंसते इंजेक्शन लगवा लेता है प्लीज गिव इट अप फॉर मिस वर्ल्ड 2017 मानुषी चिल्लर सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि पहली बार टीवी पर मैं कुछ होस्ट कर रही हूँ वो भी आप दोनों लेजेंड्स के साथ You mean one legend and one wannabe? एक मिनट मैं बता रहा हूँ इनको बता दो प्लीज इनको समझा दो और आज यहाँ पे ये मत सोचना आप हमारे साथ होस्टिंग कर पाएंगे आज ये जो करण अर्जुन है ये अलग हो चुके हैं बस गाइस तुम दोनों को ना इस रिलेशनशिप में थेरेपी की जरूरत है एज अ फ्यूचर डॉक्टर आई थिंक ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं तुम दोनों के रिलेशनशिप को इम्प्रूव करूँ बिकॉज इमोशनल हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट तो हम एक साथ कुछ ऐसा करेंगे इनफैक्ट तुम दोनों एक साथ कुछ ऐसा करोगे जो तुमने पहले कभी नहीं किया हो एक एक करके दोनों एक एक चीज बताओ जो तुम दोनों ने कभी एक साथ नहीं किया फॉर एग्जाम्पल Never have I ever hosted a show with both of you. Okay, Karan sir. अच्छा, never have I ever ये वाला गेम है अच्छा never have I ever told मनीष के actually वो इतना बुरा होस्ट नहीं है अच्छा है How sweet, Karan. क्या? That was very sweet. मेरी सांसों में तू है समाया मेरा जीवन तो है तेरा साया मेरी सांसों में तू है समाया मेरा जीवन तो है तेरा साया एक मिनट गाना बंद करो ये मेरे दिल के गाने बाहर मत बजाओ प्लीज Okay, guys, enough. Okay, Manish, now your turn. ओके नहीं हम लोग मनुश्री की बात मनुश्री ने पूछा कि ऐसा कुछ बताएं देखिए सालों की होस्टिंग और दोस्टिंग के बाद मैंने करण सर आप मानेंगे मैंने आपको आज तक डायरेक्ट नहीं किया यार सर प्लीज अच्छा तुम मुझे डायरेक्ट करो फेमस डायरेक्टर को मैं डायरेक्ट करूंगा सर आप किंग खान से रोमांस करा सकते हो आज मैं चाहता हूं आप रोमांस करके दिखाएं वो भी मिस वर्ल्ड के साथ क्या बोलते हैं लाइट्स कैमरा एक्शन सुर्ख वाला सोज वाला फैज वाला लव होता है जो लव से ज्यादा वैसे वाला लव इश्क वाला लव हुआ जो दर्द भी तो हमको आज कुछ ज्यादा हुआ इश्क वाला लव वो क्या हुआ है क्या खबर यही पता है ज्यादा हुआ इश्क वाला लव अगर ये उसको भी हुआ है फिर भी मुझको ज्यादा हुआ इश्क वाला लव सर एक काम करते हैं सर हाँ जी।
अच्छा लगा, आपने इतना अच्छा डांस किया ना, मुझे लगता है अब इसके बाद ना हमें कोई केक कटिंग वटिंग करनी चाहिए हमारी दोस्ती के लिए सर. As long as it's gluten free, sodium free, everything free, and you paid for it. या एब्सोल्युटली. और सर मैं आपको एक अलग तरीका दिखाऊंगा काटने का. आइए पीछे आइए मेरे साथ. मानुषी को यहाँ छोड़ दें अकेले. मनुश्री Yes, I can Fine. handle a crowd. हमारी अब तुम्हारे हवाले है स्टेज आइए. साथियों. Please go ahead. मैं आपको Give it up podium for तक- Manushi Chiller, ladies and gentlemen. आइए अब आपको एक हैशटैग नॉस्टैल्जिया की छोटी सी गली में ले जाती हूँ. 25 years ago जब सारी दुनिया ने वो ऐश्वर्या सुष्मिता का क्राउनिंग ग्लोरी मोमेंट टीवी पे देखा था, वो ऐसे फेस पे हाथ रखना और इंडिया की सारी लड़कियों की इंस्पिरेशन भी बन गया. मैं खुद आईने के सामने उस मोमेंट को बार बार जीती थी till I did it myself and conquered the world. और आज इन दो अल्टीमेट ब्यूटी क्वींस को ट्रिब्यूट देने में मैं बुलाना चाहूंगी the enchanting Moni Roy and the mesmerizing Nora Fateh. निमुड़ा 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 अरे काचा काचा छोटा छोटा निमुड़ा
का कसूर है Welcome back, ladies and gentlemen, to FPB Colors Femina Miss India 2019, co-powered by Sephora and Rajnigandha Pearl. Carrying forward the legacy, FPB India's fashion hub has come together with Miss India organization to look for India's next pride. FPB is ecstatic to be the title sponsor of the pageant 6th year in a row. The association strategically complements with the brand's objective of making India more stylish with a desire to democratize fashion. For the past 7 years, the pageant has been in a strategic alliance with Colors to achieve maximum mileage for the pageant. The pageant is co-powered by Sephora, where your beauty beats. It is the unparalleled international beauty leader with an amazing selection of beauty brands. Our co-powered by sponsor Rajnigandha Pearls believes अच्छाई एक अलग चमक लाती है, उसमें एक अलग चमक होती है. And this philosophy goes into the making of their product made with choicest cardamom seeds blended with purest saffron and silver coated with goodness. अब जो हम देखेंगे is the biggest star in the sky tonight. The round 3 designed by Falguni and Shane Peacock. It is called Uwa Phool Mahal. और इसकी inspiration ली गई है from the culturally rich Phool Mahal division of the great Bandi Mahal in Rajasthan. Also, the finalists will don the new collection for 2019 from Senco Gold and Diamonds, inspired by oceans and waves. It's exquisitely handcrafted with diamonds, colored stones and Swarovski, and is perfect for the confident and strong women of today. Presenting, ladies and gentlemen, our 30-state winners, the splendid collection by Falguni and Shane Peacock.
give you all the key. You're so That was absolutely scintillating and sensational. Ladies and gentlemen, please welcome with a huge round of applause the supremely talented designer duo Falguni and Shane Peacock. Absolutely beautiful. Congratulations, guys. Let us now have on stage the pageant show director, Anu Ahuja. अब वक्त है एक बहुत ही स्पेशल और इम्पोर्टेंट अवार्ड का। FPB मिस ब्यूटी विद अ पर्पस एक ऐसी खूबसूरत प्रिंसेस के नाम जो अपनी मुस्कान के अलावा अपनी बातों और आदतों से भी दुनिया सजा रही है। This award was created by the chairman of the Miss World organization, Julia Morley, in 1972. Hundreds of millions of pounds have been raised and donated to local and international organizations to aid disadvantaged children the world over. Ladies and gentlemen, and now, may we invite on stage Manushri Chillar, Miss World 2017, and Rachi Mohapatra, Chief Marketing Officer, FBB, to do the honors. And the winner, Niru Rava, which means fountain, is none other than Lakshmi Menon from Kerala, which aims to provide safe access to drinking water, reduce water pollution, and create awareness about water wastage. The winner receives a style wardrobe from FBB. Congratulations and thank you, Prachi. Thank you so much. We request Manushri to please stay back. May we please invite on stage Mr. Ravi Kejriwal, CFO, Future Retail Limited. We have a sub-contest winner, FBB Miss Multimedia. ये वो contestant हैं जिन्होंने social media पर सबसे ज़्यादा appreciation और support पाया है. FBB Miss Multimedia की winner gets a direct entry into the top 12. Wow! Ladies and gentlemen, Siddhi Gupta from Uttarakhand. The winner receives a style wardrobe from FBB, and may we request Mr. Kejriwal to do the honors. Congratulations and thank you, Manushi, and thank you, Mr. Kejriwal. And congratulations, Miss Multimedia, straight to the top 12, ladies and gentlemen. Give her a huge round of applause. और अब बाकी के 11 नाम जो अगले राउंड में जाने वाले हैं. Hold your breath, ladies and gentlemen. Our second semi-finalist is Harnas Kaur from Punjab. Our third semi-finalist is Garima Yadav from Madhya Pradesh. Our fourth semi-finalist is Lalnuntari Rualing from Mizoram. Now it's time for our fifth semi-finalist. So let's hear it for Shinata Chauhan from Uttar Pradesh. And hold your breath for the sixth semi-finalist, who is the beautiful Shivani Jadhav from Chhattisgarh. Seventh semi-finalist is Suman Rao from Rajasthan. Congratulations, Suman. Our eighth semi-finalist is Shreya Shankar from Bihar. It's time for our ninth semi-finalist, ladies and gentlemen. Let's hear it for Vaishnavi Andhale from Maharashtra. Our 10th semi-finalist is Jyoti Shmita Barua from Assam.
semi-finalists. Please welcome Mansi Takshak from Gujarat. All right, ladies and gentlemen, we have 11 semi-finalists on stage and we have a spot for just one more. Ladies and gentlemen, the last and 12th semi-finalist is... All right, let's hear it for Sanjana Vij from Telangana. Wow! Let's hear it, ladies and gentlemen, for our top 12 semi-finalists. Congratulations, girls! Our 12 semi-finalists of FPB Colors Femina Miss India 2019. And a huge round of applause for the rest of our beautiful girls. Thank you so much from the bottom of our hearts. Thank you. Let's call our top 12 one by one back again on stage for our Q&A round. इस Q&A में हमारी टॉप 12 वन बाय वन इस स्टेज पे आएंगी, स्टेज पे रखे हुए फिश बोल से चिट उठाएंगी और उसमें से जिस जज का नाम होगा उनसे अपना पर्टिकुलर क्वेश्चन पाएंगी. So let us begin the Q&A with our absolutely amazing judges. Our first semi-finalist is FPB Miss Multimedia winner सिद्धि गुप्ता from उत्तराखंड. मैं FPB कलर्स फेमिना मिस इंडिया उत्तराखंड 2019 की विजेता सिद्धि गुप्ता विश्व के 50 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में शामिल होकर दुनिया भर में कुपोषण से पीड़ित बच्चों की सहायता करना चाहती हूँ. Good evening, everyone. So the question will be asked by Miss Falguni Peacock. Do you think beauty has a shelf life? Please explain. If you have a soulful smile, loving eyes, and a kind, compassionate heart, which is willing to contribute to the world, empower others, and spread the message of love, I think you're always beautiful. And no matter what happens, you age, your skin wrinkles, you will always remain beautiful. Hence, beauty does not have a shelf life. Ladies and gentlemen, our next semi-finalist is Mansi Takshak from Gujarat. नमस्ते, मैं मानसी तक्षक FPB कलर्स फेमिना मिस इंडिया गुजरात 2019. मुझे पॉलिटिकल जर्नलिस्ट बनना है क्योंकि जर्नलिज्म को आज के समय में मिस रिप्रेजेंट किया जाता है. I should thank my stars. It's Chitrangada Singh. The question for you is, it is perceived by some that marriage is the end of women's ambition. Do you agree with that? Do you disagree, and why? I disagree. Marriage is to choose a companion, a love for life. That doesn't mean you have to stop what you're doing. I think ambition is something that you want to put your heart in, and nothing can stop you from that, not even a relation. So if you're willing enough and courageous enough to follow your dreams and your passion, then I don't think marriage would be a barrier for you. Thank you. And our next semi-finalist is Garima Yadav from Madhya Pradesh. Namaste, I am Garima Yadav, FBB Colors Femina Miss India Madhya Pradesh 2019. मॉडलिंग मेरे दिल के बहुत करीब है क्योंकि इससे मेरी जिंदगी को सही दिशा मिली. आप सभी को नमस्कार. धुति चंद. सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज करने के बारे में आपके क्या ख्याल है? सेम सेक्स मैरिज के बारे में मेरा यह मानना है कि प्यार है वो अनंत है. यह देख के नहीं होता कि सामने वाले का जेंडर क्या है. ये बिल्कुल ही सही बात है. अगर आपका अपने ही सेम सेक्स से मैरिज कर रहे हैं, सो मैं इसको सपोर्ट करती हूँ. धन्यवाद. Thank you. Ladies and gentlemen, our next semi-finalist is Suman Rao from Rajasthan. Khamma Ghani. I am Suman Rao, FBB Colors Femina Miss India Rajasthan 2019. I dream of being a star.
ताकि मैं लोगों के दिलों में हमेशा हमेशा के लिए रह सकूं। My favorite, Remo D'Souza. आज हम ऐश्वर्या राय एंड सुष्मिता सेन की क्राउनिंग के 25 साल सेलिब्रेट कर रहे हैं। अगर आपको इनके बायोपिक में एक्ट करने का मौका मिले तो किसको चुनेंगी और क्यों? अगर मुझे उन दोनों में से किसी एक की बायोपिक में एक्ट करने का मौका मिले तो मैं ऐश्वर्या राय जी को चुनूंगी। जिस तरीके से फेलियर्स को ध्यान में ना रखते हुए उन्होंने हमेशा अपने एफर्ट्स डाले और हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश की है, वो बहुत इंस्पायरिंग है। साथ ही में जैसे वो अपनी फैमिली और प्रोफेशन दोनों को संभालते हैं, वो भी बहुत बड़ी बात है। तो मैं उनकी बायोपिक में काम करना चाहूँगी क्योंकि मैं उनसे बहुत ज़्यादा रिलेट कर पाती हूँ। थैंक यू सो मच। Ladies and gentlemen, our next semi-finalist is Shinata Chauhan from Uttar Pradesh. नमस्ते, मैं शिनाता चौहान, आपकी FPB कलर्स फेमिना मिस इंडिया उत्तर प्रदेश 2019। आई एम अ ड्रीमर जो खुद पर इतना भरोसा रखती है कि वो दुनिया बदल सकती है। Chitrangada Singh. If you could be anyone in the world right now, who would you be and why? Well, I would be my mom today. She's sitting right in front of me in the crowd. Maybe she's more emotional. Maybe she's more curious for the result than what I am today. So I would love to sit in the audience and experience what she's experiencing right now. Thank you so much. And our next semi-finalist, ladies and gentlemen, is Vaishnavi Andhale from Maharashtra. Namaskar. I am Vaishnavi Andhale, FBB Colors Femina Miss India Maharashtra 2019. कैमरा मेरा पहला प्यार है और उसी के सामने रहकर I am the happiest. Remo D'Souza. What would be one piece of advice you want to give to your parents as daughter? One piece of advice I would like to give to my parents as a daughter would be to have faith in your daughter, because if the parents don't support the child, I think the world won't support her. And I'm proudly saying that my parents are sitting here, they're supporting me, and I'm so thankful to God to have such incredible parents that they believe in me, they supported me, and that's why I'm standing here. Thank you so much. Our next semi-finalist is Harnaaz Kaur from Punjab. सत श्री अकाल, मैं हरनाज कौर संधू, FPB कलर्स फेमिना मिस इंडिया पंजाब 2019। मुझे बचपन में बॉडी शेमिंग का सामना करना पड़ा, पर अपनी मॉम की मदद से आज मेरी फिजिक मेरी ताकत है। Good evening, everyone. Shane Peacock. If you were to feature on a popular magazine cover, which cover would it be and why? I will wish to be covered on Femina magazine because this platform has given me a lot, and I want to be featured as Miss India 2019. Thank you. Our next semi-finalist is Lalnuntari Rualing from Mizoram. Sibai, I am Lalnuntari Rualing, FBB Colors Femina Miss India Mizoram 2019. I can proudly say that I embody Mizoram's beauty, serenity and culture. Ayush Sharma. In this world of digitalization, which website, according to you, has had the greatest impact and why? I think every social media is now good in their own way, because we have to empower some other women through that. We can spread awareness through that. Our next semi-finalist, Shivani Jadhav from Chhattisgarh. Namaste, I am Shivani Jadhav, FBB Colors Femina Miss India Chhattisgarh 2019. मैं जिंदगी की छोटी-छोटी खुशियों को सेलिब्रेट करना जानती हूँ. It is the only sustainable way to stay happy. Hi everybody, it's Huma Qureshi ma'am. What, according to you, is the biggest problem that women all over the world face? No matter whichever field we go, no matter how much ever strong we are, the very fact that we don't get as much acceptance and as much support from people all around the society,
brings about a lot of challenges for us. And I think it's high time that we need to start working upon being accepting and being empowering towards not just women, but every single person in the world. Thank you. And our next semi-finalist, Shreya Shankar from Bihar. नमस्ते, मैं श्रेया शंकर FBB कलर्स फेमिना मिस इंडिया बिहार 2019। मेरा मानना है कि अपने दिल की सुनना बहुत ज़रूरी है और इसीलिए मैं हमेशा वही करती हूँ जो मेरा दिल कहता है। My question is going to be asked by Sunil Chhetri. What do you believe are the 3 qualities that makes or can make someone be a star in any field that he or she chooses? I believe the 3 qualities that can make anyone a star in their chosen field would be first, passion for their work and passion which drives them towards working hard for it. Second would be happiness, because it's very important for you to be happy in what you're doing. Unless you're happy, I don't think you can achieve anything. And thirdly would be hard work, because I feel that anybody in this world can be lucky if they work hard, and hard work takes you a long way. Thank you so much. Our next semi-finalist, Jyoti Shmita Barua from Assam. Namaskar. I am Jyotishmita Barua, FBB Colors Femina Miss India Assam 2019. मैं जो भी काम करती हूँ, उसी में अपनी खुशी ढूंढ लेती हूँ. And that keeps me positive. Good evening, everyone. My favorite, Vanessa. I want you to tell me, who do you think is the one person you believe represents the essence of a modern Indian woman and why? A modern Indian woman is someone who holds her family and at the same time works hard daily for her dreams. One such woman I want to mention who I think resembles a modern Indian woman is Mary Kom from Northeast India. Mary Kom is a woman. She is married. She is a mother of 2. She is a world boxing champion and she is ruling the world. She is a belief. She is a person who has made us believe when you are determined, nothing can stop you from achieving your dreams. Thank you. And ladies and gentlemen, our last semi-finalist to answer the question, Sanjana Vij from Telangana. Namaskaram. I'm Sanjana Vij, FBB Colors Femina Miss India Telangana 2019. My inspiration is my grandmother, जिन्होंने 16 साल की उम्र से मुश्किलों का ना सिर्फ सामना किया, बल्कि उन पे जीत भी हासिल की. I would request Huma ma'am to ask me a question. What advice would you give youngsters like yourself? What kind of career would you ask them to choose? One that just allows them to chase their dreams, or one that gives them financial stability? I am a biotechnology graduate, and I have been working as a project manager in a firm, but nothing gives me the amount of happiness which I'm getting right now, being on stage, performing, and living my dream. So I would always advise them to choose their dreams first. Thank you. Fabulous answers from our top 12, ladies and gentlemen. A huge round of applause to these beautiful girls. Ladies and gentlemen, to create actual ripples of change into the society, Keto and the Miss India organization have joined forces and pledged to do good for the beneficiary NGOs via various events. This year, the 30 state winners of FBB Colors Femina Miss India have raised a total amount of rupees 17,39,483 rupees, with Siddhi Gupta from Uttarakhand being the highest contributor with 3,65,797. A huge, huge round of applause for this endeavor. Welcome back, ladies and gentlemen, to FBB Colors Femina Miss India 2019. And now, here we have the names of the top 6 finalists of
FBB Colors Femina Miss India 2019, co-powered by Sephora and Rajnigandha Pearls. And ladies and gentlemen, this is the final 6. Our first finalist is Shreya Shankar from Bihar. Ladies and gentlemen, second finalist is Shivani Jadhav from Chhattisgarh. And ladies and gentlemen, hold your breath for our third finalist. Our third finalist is Jyoti Shmita Barua from Assam. With that, we come to our fourth finalist. And ladies and gentlemen, our fourth finalist is Shinatha Chauhan from Uttar Pradesh. Our fifth finalist, ladies and gentlemen, is the very beautiful Sanjana Vij from Telangana. Ladies and gentlemen, it's time to announce the sixth finalist. And the name is Suman Rao from Rajasthan. Whoa! Congratulations to our top 6. इन्हीं में से कोई होगा आज रात द क्वीन ऑफ हार्ट्स, मिस इंडिया का टाइटल का हकदार, और हमारी वो gorgeous girls जो यहाँ से इस कंपटीशन को अलविदा कहेंगी. Trust me when I say this, you girls are unbelievable. आप 6 से एक कॉमन क्वेश्चन पूछा जाएगा. At any given time, बाकी की 5 फाइनलिस्ट को हेडसेट पहनना है जिसमें आप म्यूजिक सुनेंगे ताकि आप दूसरों के जवाब ना सुन सके. All right, Suman Rao from Rajasthan. Are you ready for your question? What does feminism mean to you? When we talk about feminism, it's about having the equal status in the society. No matter you are a man or a woman, we both deserve to get equally paid. We both deserve to get equal respect in the society. And we both get equal rights to take decisions about our own body. And that is what feminism means to me. Thank you so much. Wonderfully answered. Thank you so much. Our second finalist is Shinatha Chauhan from Uttar Pradesh. Congratulations, Shinatha. सवाल ये है, what does feminism mean to you? Feminism आपके लिए क्या मायने रखता है? Feminism for me means fighting for equal rights. It's not about degrading any men. We as women were not treated equally in this society. So now we gather all the courage and fight for our rights. And it means the world to me because I have seen women degraded in my own family. So it's very close to my heart. Thank you so much. Thank you. Please. Ladies and gentlemen, our third finalist, Shivani Jadhav from Chhattisgarh. Feminism आपके लिए क्या मायने रखता है? What does feminism mean to you? Feminism was created because we felt the need to fight for our rights. That is why there is no manism, because men have always enjoyed rights and privileges in their life. Thank you. It's not about saying that we are superior than men, but it's all about saying that give us equal opportunity for the kind of decisions that we make and just don't be judgmental. In fact, I think that feminism need men. We need men to stand for us. We need men to stand for their mom, for their wife, for their daughter. And we need men to say that we are going to change the game for the next generation. Thank you. Thank you. Our fourth finalist, ladies and gentlemen, Shreya Shankar from Bihar. What does feminism mean to you? Here it is.
I would say feminism means seeking equality with dignity and grace without belittling any gender, because everyone out here deserves to be empowered together. And feminism is all about equality. Thank you so much. Our fifth finalist, ladies and gentlemen, is Jyoti Shmita Barua from Assam. What does feminism mean to you? Feminism आपके लिए क्या मायने रखता है? Thank you for the wonderful question. Feminism, according to me, means equality, irrespective of sex or sex orientation. Feminism doesn't mean ladies first. Feminism means who needs it the most, the one should go first. Thank you. Our sixth and final finalist is Sanjana Vij from Telangana. Are you ready for your question? All right, here it is. Feminism आपके लिए क्या मायने रखता है? Feminism is about freedom, it's about choice, and giving women equal opportunities as men. So they both are equal, and they both deserve equal love and respect, and so does all the individuals and humans out here. Thank you. Ladies and gentlemen, for the final, the finale, scintillating performance of the night, the sexy, the uber cool, and supremely talented superstar, Katrina Kaif. I know you want it, but you're never gonna get it. तेरे हाथ कभी ना आने, मनी लगाने कोई दुनिया ये सारी मेरी इश्क की है दीवानी, इश्क की है दीवानी, इश्क की है दीवानी. I know you want it, but you're never gonna get it. तेरे हाथ कभी ना आने, मनी लगाने कोई दुनिया ये सारी मेरी इश्क की है दीवानी. अब दिल करता है हौले हौले से मैं तो खुद को गले लगाऊं, किसी और की मुझको जरूरत क्या, मैं तो खुद से प्यार जताऊं. What's my name? What's my name? What's my name? My name is Sheila. हाथ में रात ये बाकी है, बात ना पाक वफा की है. हाथ में रात ये बाकी है, बात ना पाक वफा की है. संदली सी पुरवाई साथ है. तू है ना काम मोहब्बत में, मैं चलूं प्यार की शिद्दत में. धुंधली सी रुसवाई साथ है. काम तो आजा मेरे, सोचना यार सवेरे. छोड़ दूंगी मैं घर पे करना है क्यों हम. हुस्न पर जब लहराया यार हुस्न पर जब लहराया यार नीमे कमली कमली, नीमे कमली कमली, नीमे कमली कमली. तुझ जैसे 36 फिरते हैं मेरे वर्गी और न होनी वे. तू मुंडा बिल्कुल देसी है, मैं कटरी ना तो सोनी वे. सोनी वे. ਧੁੰਮਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਤੂੰ ਚੰਗੀ ਕਰ ਤੋਂ ਆਈ ਨੀ.
ਮੈਨੂੰ ਕਾਲਾ 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 ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲਾ ਚਸ਼ਮਾ ਜੱਟਦਾ ਏ से करेंगे सबका स्वागत से करेंगे सबका स्वागत से करेंगे सबका स्वागत Welcome back, ladies and gentlemen, to FBB Colors Femina Miss India 2019, co-powered by Sephora and Rajnigandha Pearls. और अब वक्त है ये देखने का कि FBB Colors Femina Miss India 2019 के results क्या रंग लाए हैं. And now we'd like to invite a beauty with substance. Please welcome FBB Colors Femina Miss India 2018 second runner-up Shreya Rao Kama Varapu. So, ladies and gentlemen, the FBB Colors Femina Miss India runner-up 2019 is the gorgeous Miss Telangana, Sanjana Vij. Huge round of applause again for Sanjana, ladies and gentlemen. Now, please welcome FBB Colors Femina Miss India United Continents 2018, Gayatri Bharadwaj, to come on stage for crowning of FBB Colors Femina Miss India United Continents 2019. Ladies and gentlemen, the FBB Colors Femina Miss India United Continents 2019 is Miss Bihar Shreya Shankar. Wow, congratulations, Shreya. Such an amazing achievement. Such tremendous glory. The crowning glory. Thank you so much for doing the honors. And now, please welcome Miss Grand International 2018 first runner-up Meenakshi Chaudhary to come on stage for the crowning of FBB Colors Femina Miss India Grand 2019. And ladies and gentlemen, the FBB Colors Femina Miss
Grand India 2019 is Miss Chhattisgarh Shivani Jadhav. The head that wears the crown rules the hearts, as they say. Congratulations for all your achievements. Ladies and gentlemen, that moment is here. Jab India ko milegi our next beauty queen. So are we ready, ladies and gentlemen, for the grand moment, the crowning moment of FPB Colors Femina Miss India World 2019. Please welcome the FPB Colors Femina Miss India World 2018, Anukriti Vaz, and Miss World 2018, Vanessa Ponce de Leon Sanchez, to sash and crown FPB Colors Femina Miss India World 2019. Ladies and gentlemen, the FBB Colors Femina Miss India World 2019 is... We're going to say it together at the count of 3. Are you ready? 1, 2, 3. Miss Rajasthan Suman Rao! Yes! There comes the moment, Anukriti to crown the winner, Suman Rao. The FBB Colors Femina Miss India World 2019 receives prize of up to 12 lakhs, and FBB Colors Femina Miss India United Continents 2019 and FBB Colors Femina Miss India Grand 2019 receives a prize of up to 7 lakhs each on behalf of Miss India organization and BCCL. And now may I invite on stage Anuja Bhotia, Head Designer Western Wear FBB, to do the honors. The FBB Colors Femina Miss India World 2019 receives a style wardrobe from FBB worth rupees 1 lakh. And FBB Colors Femina Miss India United Continents 2019 and FBB Colors Femina Miss Grand India 2019 both receive a style wardrobe from FBB worth rupees 50,000 each. And now we would like to invite on stage Soju Alex, National Category Head Sephora India, to do the honors. The FBB Colors Femina Miss India World 2019 receives a gift hamper from Sephora worth rupees 1 lakh. And FBB Colors Femina Miss India United Continents 2019 and FBB Colors Femina Miss Grand India 2019 both receive gift hampers from Sephora worth rupees 50,000 each. And now, may I please invite on stage Mr. C.K. Sharma, Business Head DS Group, to do the honors.
The FBB Colors Femina Miss India World 2019 receives a cash prize from Rajnigandha Pearls worth rupees 1 lakh. And FBB Colors Femina Miss India United Continents 2019 and FBB Colors Femina Miss Grand India 2019 both receive a cash prize from Rajnigandha Pearls worth rupees 50,000 each. And now, ladies and gentlemen, we would like to thank the people without whom this evening would not have been possible. Title sponsor FBB, exclusively on Colors, co-powered by Sephora, co-powered by Rajnigandha Pearls, confidence partner Triumph, glowing skin partner Blossom Kosher Aroma Magic, jewelry partner Senko Gold and Diamonds, footwear partner Centro, technology partner Reliance Digital, skincare expert Dr. Twacha, education partner INIFT, knowledge partner INIFT Academy of Interiors, vision partner Kodak Lens, travel partner Getaway Goddess Holidays for women from Cox and Kings, vacation partner Saffron Stays, salon partner Glam Studios, grooming expert Dr. Blossom Kosher, holistic health guru Dr. Mickey Mehta, hydration partner Wild Water, music partner T-Series, radio partner Radio Mirchi, multiplex partner Carnival Cinemas, show director Anu Ahuja, designer for Dances of India Raw Mango, accessories by Jewelry by Karishma Mehra, designer for FBB collection round Pankaj and Nidhi, designer for finale round Falguni Shane Peacock, fashion director Isha Amin, hair and makeup designer Bianca Lorazzo, ramp walk trainer Alicia Raut, associate stylist Shifa Gilani, Bharat Gupta, Meghna Sajwani and Janvi Turakia. Performances choreographed by Tushar Kalia. Outdoor partner Bright Outdoor Media Private Limited. Celebration partners Grey Goose and Ultra. Script writers Abbas Dalal, Mariam Pardawala and Aditya Merchant. Backstage management Dilnaz and Kamal. Creative director of the show Ritika Bajaj. Technical direction and stage management On Cue Productions. Ground production Dome Entertainment Private Limited. Venue partner Dome NSCI SVP Stadium Worli. Event director Karan Surma. Event directed and managed by Cineyug International Entertainment Private Limited. Television and web series production Time Studio. Pageant coverage Zoom. Let's have a big hand for all our sponsors, ladies and gentlemen. Let's have a big hand.